Hi, sir. Hi. So, atoms and nuclei, as you know, we are aware that there was a scientist by the name of Dalton, and he proposed that atom is indivisible, right? You can't divide atom. But then, in the beginning of 19th century, there were a lot of developments which took place, and the first was J.J. Thomson. He said that atom is divisible and it consists of equal number of positive charges and equal number of negative charges. And this model, the number of positive charges and number of negative charges are equal. And then he called it plum pudding model, but somehow it was discarded because I could not explain many things. After that, Rutherford and his students did some experiments, and then that's how Rutherford model came into. So after Rutherford experiment, he proposed his own model, which is called Rutherford model. So there'll be one question for 3 marks, or maybe 2 marks also, that explain Rutherford experiment. This is also called Marsden and Lennard experiment. So if you come across a question where they, ask you that explain Marsden and Lennard experiment, this is the same as Rutherford experiment. So it could be for 3 marks. What was the experiment? He took a gold foil, very thin gold foil. It is so thin that it is could be 9 to 10 times thickness of atom, very thin foil of gold. And then he bombarded these with the alpha particles. What is alpha particle? This is helium atom. It consists of 4 unit of masses and 2 unit of charge. That is, it has 2 protons, 2 neutrons, and 2 electrons. 2 protons and 2 neutrons are inside the nucleus, whereas electrons are revolving around the nucleus. So if you have helium atom, which basically ionized helium atom, doubly ionized helium atom. So if helium atom gives away 2 electrons, it will be doubly ionized helium ion. So a doubly ionized helium ion is called alpha particle. This is alpha particle. अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट होता है and its charge is 2 units. Like proton also has mass m and charge e. This is for alpha particle. Alpha particle, deuteron, and proton.
Alpha particle has four unit of masses, two unit of charge on it. Deuteron has two unit of mass. So deuteron is basically 1h2. It contains one proton, one neutron. Charge is E. Proton has mass m and charge E. This we did in that chapter. Um, Magnetism, magnetic effects of current. Like you had alpha particle, deuteron, proton entering inside uniform magnetic field, and then they move in a circular path, a helical path. Find the ratio of the radii, momentum, kinetic energy. So this was used. तो न्यूट्रॉन का क्या होगा? Neutron has only mass; it does not have any charge. अच्छा, So ओके। the symbol for neutron would be like this. ओके। Atomic number will take as 0. Mass number will take as 1. Neutron has almost the same mass as that of proton. Mass of neutron is 1.67 10 to the power minus 27 kg. Mass of proton slightly less. And inside nucleus, there is a continuous exchange of proton into neutron and neutron into proton by exchanging an electron along with it. And apart from electron, there's a positron also. There's a subatomic particle called positron. Positron is this. It has positive charge and zero mass. Electron, it is like this. It has it has zero mass, almost zero mass and negative charge. और इसमें तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था? अल्फा पार्टिकल का सोर्स था बिस्मथ. Bismuth is basically radioactive, so it basically gives out alpha particle, beta particle, and gamma rays. So alpha speeding alpha particle were used to hit gold foil. In fact, source of alpha particle was put in a lead crucible. यहाँ पे बिस्मिथ था. Alpha particle release हुए. They bombarded. They were moving with kinetic energy say Ke, and they were hitting this gold foil. ये सारा एक बार लिख लो ताकि I'll remove this and start preparing for test on wave optics. After wave optics, there'll be tests on ray optics. Then after that, dual nature, then atom, nuclei, and then semiconductor. And then I'll again restart with the chapters, first chapter onwards. So what were the observations and how do you figure out what's happening? Because we can't see the alpha particle by naked eye. So what they did, they placed a zinc sulfide screen over here, a screen of zinc sulfide. Zinc sulfide is basically a material which gives out light, illuminance when alpha particles are incident on that. So all around it, there was zinc sulfide screen. So they found that maximum alpha particles were able to pass through. Most of the alpha particles were able to pass through thin gold foil. Very few got scattered at an angle theta, and very, very few
would retrace their path. So this was an observation by रदरफोर्ड और मार्सडन एंड लिनार्ड. डायग्राम बना लो, फिर इसका वो लिखते हैं थोड़ा सा, ऑब्जर्वेशन एंड देन द कंक्लूजन पार्ट. दिस वुड बी 3 मार्क क्वेश्चन. इनफैक्ट इसके ऊपर ना देयर वाज अ मूविंग डिटेक्टर आल्सो, by which we can identify at what angle how many alpha particles are scattered. डायग्राम बन गया सभी का? बना लिया? लिखो, as shown in figure, as shown in figure, there was a source of, there is a source of alpha particles. As shown in figure, there is a source of alpha particles. ब्रैकेट में लिख लेना हीलियम न्यूक्लियस. अल्फा पार्टिकल के आगे ब्रैकेट में लिखो हीलियम न्यूक्लियस. क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? हीलियम न्यूक्लियस बचेगा ना, डबली आयनाइज हीलियम, दैट्स अल्फा पार्टिकल. So as shown in figure, there is a source of alpha particle, and there is a screen. There is a thin gold foil. There is a thin gold foil placed. There's a thin gold foil placed in front of in front of the source of alpha particle. In front of the source of alpha particles. There is a moving detector. There is a moving detector by which the angle of deflection, by which angle of deflection of deflected alpha particle, deflected alpha particle can be measured. And the following and the following results were observed. The following results were observed. Result number 1 or observation number 1. क्या था पहला रिजल्ट? दैट maximum alpha particle, maximum number of alpha particles, maximum number of alpha particles could easily pass through. Maximum number of alpha particles could easily pass through the gold foil. ये कैसे पता लगा होगा? Because angle of deflection was almost zero. Maximum number of alpha particles were detected over here by the detector. मतलब maximum alpha particles were not deflected at all. They passed through the gold foil easily. Number 2, the second observation, few alpha particles, few alpha particles
were scattered, few alpha particles were scattered or deflected or deflected by an angle theta. Few alpha particles were deflected by small angle theta. आगे लिखो. Very few alpha particle, very few alpha particles retraced their path. Very few alpha particles retraced their path. तो ये तीन ऑब्जर्वेशन है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के. अब इनका कंक्लूजन क्या होगा? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दीज? भाई हो क्या रहा है? गोल्ड फॉइल है ना, गोल्ड फॉइल इज मेड ऑफ गोल्ड एटम्स. यहाँ पे गोल्ड एटम्स हैं जिससे गोल्ड फॉइल बनी हुई है. तो अगर अगर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इनसे पास हो पा रहे हैं, इसका मतलब देर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड एटम. अब लिखो कंक्लूजन्स. What conclusions, Rutherford drew from this experiment? Conclusions were as following. First conclusion: most of the space inside atom, most of the space inside atom is empty. Most of the space inside atom is empty. ये कैसे पता लगा? बिकॉज मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अगर उससे पास कर रहे हैं स्क्रीन गोल्ड फॉइल से, मतलब मैक्सिमम उनको वहां पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं मिला है ना. देयर वाज एम्प्टी स्पेस इनसाइड एटम, सो मोस्ट स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी. और कुछ अल्फा पार्टिकल दे वर स्कैटर्ड बाय स्मॉल एंगल थीटा. एंड एट द सेम टाइम फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एंड रिलेटिवली भी इनका मास भी अच्छा खासा होता है. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m एंड द चार्ज इज +2e. पॉजिटिव चार्ज होता है. तो अगर ये रिबाउंड हो रहा है, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इनसाइड एटम. लिखो सेकेंड कंक्लूजन: देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज पार्ट inside atom which he named nucleus. Which he named nucleus. Also, this nucleus must account for this nucleus must account for the entire mass of the atom. Nucleus must have or account for the entire mass of atom. बिकॉज बाकी जगह तो सारा खाली एम्प्टी स्पेस था. तो जो भी मास होगा वो न्यूक्लियस में होना चाहिए, बिकॉज न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज. और अल्फा पार्टिकल जो कि लाइट पार्टिकल नहीं है, अगर वो रिबाउंड हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इसको रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, रिपेल भी कर रहा है. और टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है. ये तभी पॉसिबल है जब न्यूक्लियस का मास काफी ज्यादा होगा. जैसे वॉल पे, दीवार पे तुम बॉल को फेंकते हो तो वो वापस आ जाता है. अगर दीवार वॉल सॉलिड है तो बॉल टकरा के वापस आएगी. अगर मान लो ये वॉल सॉलिड नहीं है तो फिर तो बॉल आगे चली जाएगी थ्रू इट. तो अगर अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस मस्ट बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड शुड बी हाईली डेंस्ड आल्सो. सो व्हेन इट्स हाईली डेंस्ड, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें काफी सारा मास है. नेक्स्ट, एज atom is electrically neutral, as atom is electrically neutral, as atom is equally neutral, there must be
there must be equal and opposite. There must be equal and opposite negative charge. They must be equal and opposite negative charge. आज से 26 है ना? तो दिस वाज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स को अभी याद कर लो, डायग्राम याद कर लो, फिर रदरफोर्ड मॉडल करते हैं उसके बाद. Remember the diagram, observations and conclusion. This is worth 3 marks. This is nucleus. Z is atomic number. Mass number is always Z plus N. Any element is represented like this. If you have element X, then it would be ZXA. Z matlab atomic number, A is mass number. For example, sodium 1123. That would mean that mass number is 23, atomic number is 11. So if you substitute this, A is 23, Z11, N would be how much? 12. N is number of neutrons. Neutrons were discovered later by Chadwick, who discovered neutrons. Till Rutherford experiment, only electrons and protons were discovered. But so what is atomic number? Atomic number is number of protons or number of electrons in unionized atom. लिख लो atomic number. केमिस्ट्री में इशारा किया होगा वैसे, ये फिर भी लिख लो. लास्ट 11 में था ना सारा ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. Atomic number is number of protons inside the nucleus or number of electrons in unionized atom. Number of electrons in unionized atom. क्योंकि अगर आयनाइज्ड हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज हो जाएंगे ना. अगर मान लो ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस 11 हो गए. लेकिन अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, आयनाइज्ड हो गया सोडियम, तो उस केस में क्या होगा? आयनाइज्ड सोडियम मींस इट वुड हैव 11 प्रोटॉन्स बट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो इट शुड बी अनआयनाइज्ड. So number of protons or number of electrons in unionized atom is called atomic number. And जो modern periodic table है, it's basically based on atomic number. ठीक है? Mass number लिखो. What is mass number? Mass number is the sum of number of neutrons and number of protons.
It is equal to sum of number of neutrons and protons. That is the mass number. And neutron number is number of neutrons. Neutron number is number of neutrons. तो मान लो ये न्यूक्लियस है. So number of protons inside the nucleus would be equal to the atomic number Z. Charge on one proton is plus E. So the total charge inside the nucleus would be plus ZE. And this alpha particle, which has kinetic energy Ke, and it is helium nucleus. A speeding alpha particle is moving towards the nucleus of gold or whatever. It is also positive. It is also positive. So it will be deflected, say, through an angle theta. So this distance R naught is called distance of closest approach. What is R naught here? There are few terms which you have to remember. उसमें numerical भी आ सकता है. Distance of closest approach is R naught. What is this distance? How would you define this? It is the shortest distance between the alpha particle and the nucleus. The shortest distance between speeding alpha particle and nucleus, distance of closest approach की definition. Distance of closest approach is the shortest distance between speeding alpha particle and the nucleus at which, after which alpha particle, after which alpha particle is deflected. तो इस डिस्टेंस के बाद वो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है. तो थीटा क्या है? थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. ओके. सो लाइक एक और जो अल्फा पार्टिकल हिट करेगा, सो कितना डिग्री से वो चेंज ऑफ हाँ. कोर्स होगा उसका? यस. तो the shortest distance will be R naught. And R naught is basically approximately equal to the radius of nucleus also. R naught से हमें radius of nucleus का आइडिया लग जाता है. तो अभी क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल जब बहुत दूर है न्यूक्लियस से, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, we can apply conservation of energy principle. The only energy alpha particle has is kinetic energy. The potential energy would be almost zero. If you remember, if the two charges q1 q2 separated by separated by distance r, what is the electrostatic potential energy? K q1 q2 by r. Electrostatics. The two charge particle having separation r between them, then energy is k q1 q2 by r. तो इस मोमेंट पे एनर्जी कितना होगा इनका? k q1, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है, न्यूक्लियस का चार्ज z ही है, डिवाइड बाय डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. अब जब अल्फा पार्टिकल बहुत नजदीक आएगा तो इस मोमेंट पे मोमेंटरली वो रेस्ट पे आ जाएगा, बिकॉज अल्फा पार्टिकल विल बी रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी. सो नाउ एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस एनर्जी वुड बी ऑलमोस्ट जीरो, स्पीड वुड बी ऑलमोस्ट जीरो. एट अ पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन उसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो हो गई. द ओनली एनर्जी इट हैज नाउ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, के 2e ZE बाय डिस्टेंस कितना हो गया? R naught.
So K is equal to twice KZE square by R naught. And then that's how we get the formula for R naught. R naught is 2KZE square by kinetic energy of alpha particle. अल्फा पार्टिकल लिख लो यहाँ पे. So this is the formula for distance of closest approach. Then there's another term called impact parameter B. This is basically the distance between the path of alpha particle and the axis of the nucleus. Distance between the path of alpha particle and the axis of nucleus. क्या हुआ अनन्या? सर पता नहीं बीच में लैपटॉप शट डाउन हो गया था। अच्छा, लिख लो इम्पैक्ट पैरामीटर का डेफिनेशन. Impact parameter is distance between path of alpha particle, perpendicular distance between path of alpha particle and axis of nucleus. इम्पैक्ट पैरामीटर को डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला वो याद करना है. फॉर्मूला याद कैसे करोगे? 2 को हटा दो, के जेड ई स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और 2 की को रिप्लेस कर दो कॉट थीटा बाय 2 से. सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर दिस. इम्पैक्ट पैरामीटर में 2 को रिप्लेस कर दो cot theta by 2 से. So both impact parameter and distance of closest approach tells us about size of nucleus. And the size of nucleus was measured to be around 10 to the power minus 15 meter. This is the size of nucleus. And size of atom, size of atom is 10 to the power minus 10 meter. तो दोनों में 10 टू द पावर 5 का डिफरेंस है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम न्यूक्लियस को साइज ऑफ फुटबॉल माने तो एटम का साइज क्या होगा? हिमालय. दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम. इतना स्पेस है, फुटबॉल एंड द हाइट ऑफ हिमालय. So much of empty space is there inside atom. That's why neutron star has so much high density, because entire mass is inside a very small nucleus. कुछ एक बार इसको गो थ्रू कर लो, याद कर लो, ताकि अब ये यहीं पे याद हो जाएगा. बिकॉज नवंबर में यू गाइस गोना हैव योर प्री बोर्ड्स. अब हम प्री बोर्ड की और बोर्ड की तैयारी करें सीधा.
जो मैंने मार्सडन लिनर्ड लिखवाया था ना, वो गीगर है। गैगर एंड मार्सडन। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को ये भी बोल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन देखो। क्वेश्चन नंबर वन ऑन द पेज 19 असाइनमेंट में। इसमें वो देखो, मोबाइल खोलो। हाँ, कहाँ पे? यहीं पे। हाँ, लिया हो। क्या हो गरिमा, आज फिर तुम बीमार हो गई? मैं आई तो थी पिछली क्लास। अरे आज तो नहीं आई, आज की बात कर रहा हूँ वो थक गई थी थोड़ा सा। मैं। क्वेश्चन नंबर वन, पेज 19। What is the distance of closest approach to the nucleus of 7.7 MeV alpha particle before it comes to momentary rest and reverses direction? Now, do you know what is the atomic number of gold? Atomic number of gold याद है किसी को? 78 या 79 होता है। 79। तो Z को 79 ले लेना, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर लेना, मेगा इज 10 to the power 6, और उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेना। कर लो, यूज दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन वन, पेज 19। Distance of closest approach is twice kZe square by kinetic energy of alpha particle. कैपिटल एम होता है 10 to the power 6, के होता है 10 to the power 3, स्मॉल एम होता है 10 to the power -3 मिली। बाकी तुम्हें मालूम है, माइक्रो, नैनो, पिको, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लेना। सो यू हैव द वैल्यू ऑफ के। मिल गया क्वेश्चन? पेज 19 पे जाओ ना, ये लो।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10⁻⁻19 जूल। और मिलियन तो मैंने बता दिया, 10⁻6 होता है। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये वाला फॉर्मूला था ना के, ओ पुराना वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये के वो नहीं है, किलो वाला। दिस के इज किलो। किलो, मेगा, मिली, माइक्रो। दैट के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में। तो 2.95 into 10⁻⁻14। ओके, This will be in meters, right? इलेवन मीटर्स। So, एक तो कट ही जाएगा इससे। तो 79 77 ऑलमोस्ट कट ही रहा है। 18 into 16 करना है तुम्हें। देखो पीछे आंसर क्या दे रखा है। कौन सा माइनस? ये तो के है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला के। हाँ, कूलम्स लॉ वाला भूल गए तुम? ओ, जो पढ़ा था 2 साल पहले, वही तो है। वो कैसे भूल सकते हो, अभी तुम एग्जाम दे के आई हो। अनन्या हो गया? आरव हो गया? yes. इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। लिखो, इसमें क्वेश्चन में लिख लो, ऑल्सो फाइंड इम्पैक्ट पैरामीटर। ऑल्सो फाइंड इम्पैक्ट पैरामीटर if angle of deflection is if angle of deflection is 60 degree. Angle of deflection is 60 degree, and atomic number of
atomic number of the nucleus in the experiment is 60, 60. 60. Find impact parameter if angle of deflection is 60 degree and atomic number of the nucleus is also 60. इम्पैक्ट पैरामीटर का मैंने बताया था, इसी फॉर्मूले में आर की जगह 2 आ जाता है, मतलब कॉट थीटा आ जाता है. जस्ट रिप्लेस r by 2 by cot theta by 2. So it will become impact parameter. Kinetic energy same ले लेना, 7.7 mega electron volt. Theta is 60 degrees, z is 60, and the kinetic energy is the same. 7.7 10 to the power 6 electron volt, which you need to convert into joule. भव्य मार्क्स मिल गए. भव्य, क्या नींद आ गई तुम्हें? Calculate this. गरिमा, मार्क्स तो तुम्हें मिल गए होंगे ना? आके बताऊंगी. हाँ, आके बताऊंगी. तो आओगे तो आती कहाँ हो तुम क्लास में? कल आऊंगी तो. अच्छा, ठीक है. ये इससे कट जाएगा. Cot 30 would be √3. अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? तो 1.27 to 10 raised to minus 14. So it is 1.2 into. 10 raised to power minus 14. Okay. So this is the impact parameter. Both impact parameter and distance of closest approach tells us about the approximate size of the nucleus. Now let's write postulates of Rutherford atomic model. लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो. Write postulates of Rutherford
atomic model, right? Postulates of Rutherford atomic model. Point number one. Point number one, देखो, there is lot of empty space inside atom. There is a lot of empty space inside atom, and the entire mass of atom is concentrated in a small part of the atom, called nucleus. Next देखो, positively charged protons account for mass of the atom are inside the nucleus, are situated inside the nucleus. उसका रीजन ये था कि न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड लेटर, situated inside the nucleus. Chadwick discovered neutron later. So see, in the beginning, he said that only positive charge account for the mass of the atom. Next, atom is electrically neutral, as atom is electrically neutral. Negatively charged electrons are revolving around around the nucleus in circular orbits. तो ये रदरफोर्ड के postulates थे, and with this he could explain many things, but there were some problems also. Like, according to classical physics, if a charged particle accelerates, then it will radiate its energy, and ultimately it will jump into the nucleus, making nucleus unstable, atom unstable. And also it could not explain various kind of spectrums of hydrogen and hydrogen-like atoms. So that was the drawbacks of Rutherford experiment. वो भी 1 mark का आ सकता है, 2 mark का आ सकता है. लिख लो, write two drawbacks for the failure of Rutherford model. Write two drawbacks for the failure of Rutherford model. Number one, according to classical physics, an accelerating charge will radiate energy. An accelerating charge will radiate energy in the form of electromagnetic radiation. Due to which its radius will continuously decrease. And it will jump into the nucleus. Making it unstable.
तो ये पहला ड्रॉबैक था। सेकंड लिखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन it could not explain the spectrum of atoms beyond hydrogen. So this was a cause of failure of Rutherford model. Then you must have heard the name of this scientist, Niels Bohr. So after the failure of Rutherford, atomic model, Niels Bohr's ne postulates these postulates could be for 3 marks, along with the derivation for radius, kinetic energy, and speed of electron could be 5 mark question. तो पहले हम लिखते हैं बोर्ड्स postulates. लिखो क्वेश्चन के फॉर्म में, राइट postulates for postulates for Bohr atomic model. Write postulates for Bohr atomic model. शनाया, आज तो तुम्हें वो दिखाना था अपना रजिस्टर होमवर्क वाला, आपको फोटो भेज दूँ। कल लिया ना? अच्छा ठीक है, कार्य हो रहे हैं क्वेश्चंस? पूछ रहे हो आप? अच्छा चलो कल देख लेंगे। ठीक है। नंबर 1 लिखो। atom consists of atom consists of nucleus which contains positive charge and account for the entire mass of atom. Entire mass of atom. Second postulates equal number of negatively charged electrons are revolving around the nucleus. Equal number of electrons are revolving around the nucleus, and hence atom is electrically neutral. अब देखा जाए तो ये दोनों पॉस्टुलेट तो वहां भी थी, रदरफोर्ड में भी थी. So what was the important point was in the point number 3. आगे लिखो. Electrons can revolve only in those orbits. Electrons can revolve only in those orbits where angular momentum of electron, angular momentum क्या होता है? Angular momentum को L से represent करते हो, and the formula for angular momentum is I omega or mvr. M is mass, v is velocity, r is radius. Only those orbits are allowed where angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi. Only those orbits are allowed, or electrons can revolve only in those orbits where angular momentum equals to
integral multiple of h by 2 pi. That is mvr is equal to n into h by 2 pi. N is अरे a एक बार whole, वापस बोल दो थोड़ा। only those orbits are permitted, or electrons can revolve only in those orbits where angular momentum of electron, ब्रैकेट में लिख लो L is equal to mvr. Only those orbits, electron can revolve in all those orbits where angular momentum electron, ब्रैकेट में L equal to mvr, is integral multiple of h by 2 pi. Integral multiple of h by 2 pi. मतलब mvr क्या हुआ, n into h by 2 pi हो गया, n is integer. So this postulate is also called quantization of orbits. This postulate is also called quantization of orbits. अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, नेक्स्ट लिखो. as long as as long as electrons are revolving in these stationary orbits, इन ऑर्बिट्स को जो कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, बोर्ड ने कहा दीज आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स. he called them stationary orbits. तो according to this postulate, as long as electrons are revolving in these stationary orbits, they do not radiate any energy. As long as electrons are revolving in these stationary orbits, electron will not radiate any energy. तो जहां पे रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था, वो चीज यहाँ पे इसने बोला कि दो दीज आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, मतलब इट विल नॉट जंप इनटू द न्यूक्लियस. रदरफोर्ड वाले में ऐसा नहीं था, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन करेगा रिवॉल्व एंड अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में चला जाएगा. बट यहाँ पे द ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, एज ए रिजल्ट नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी. लेकिन अगर suitable amount of energy is given to the electron, it may jump to higher orbit. लिख लो. if suitable amount of energy if suitable amount of energy is given to the electrons in the stationary orbits, if suitable amount of energy is given to the electron in the stationary orbits, they may jump to the higher orbit. Then electrons may jump over to higher orbit. ब्रैकेट में लिखो एक्साइटेड स्टेट. ब्रैकेट में लिखो एक्साइटेड स्टेट. तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को इनफ एनर्जी दिया, तो हो सकता है वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, या और ज्यादा एनर्जी है तो यहाँ पे चला जाए, और ज्यादा एनर्जी है तो यहाँ पे आ जाए. ठीक है, तो दे माइट जंप ओवर टू द एक्साइटेड स्टेट. तो दीज वर द पोस्टुलेट्स. अब जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हो सकता है वो वापस लोअर ऑर्बिट में आए, तो उस केस में वो एनर्जी रिलीज करेगा, एच न्यू. इसी में आगे लिख लो, when electron jumps from excited state to lower state, when electron jumps from excited state to lower state, it will release energy. तो एनर्जी कब रिलीज होगी, जब एक्साइटेड स्टेट से वो लोअर स्टेट में आएगा. एक बार गो थ्रू कर लो ये सारा. इसको याद कर लो अभी.
Bohr's postulates. गरिमा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था बताना, बोलना क्या लिखा तुमने? Atom consists of nucleus which contains positive charge and account for an entire mass of atom. ओके, सेकंड पोस्टुलेट अनन्या बताना। अनन्या। Equal number, yes, sir. Equal हाँ। number of negatively charged electrons are revolving around the nucleus and hence हाँ। atom is electrically neutral. ओके, थर्ड क्या था अगस्त से? Electrons revolve in the nuclear orbits where I couldn't get it after angular momentum, sir. Electron revolve only in those orbits where angular momentum electron is integral multiple of h by 2 pi. Is integral multiple of? h by 2 pi, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ जी, और मैथमेटिकली ये लिखोगे तुम mvr equal to n into h by 2 pi, where n is 1 2 3 4 so on. ठीक है Only सर। those orbits are allowed where angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi. तो इंटीग्रल का मतलब वही होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये था। ठीक है सर। वेर m is mass of electron, v is the speed of electron, r is the radius of electron। और लास्ट क्या था नेक्स्ट, और भी दिखवाया था मैंने, शनाया? As long as electrons are revolving in the stationary orbits, they do not radiate any energy. Yes, so this is the quantization postulates. The Bohr's, these orbits were quantized. When all possible orbits are not there, only those orbits are allowed where this condition is satisfied. And the last क्या था आरव? If suitable energy is provided to electrons in the stationary orbits, they may jump to higher orbits, which is the excited state. Yes, and when they jump to lower orbit they will Release energy. perfect। तो ये था। अब हम क्या करेंगे, there could be 3 marker or 5 marker question where you will be asked to find the radius of orbit। इसको बोर्स ऑर्बिट भी बोला जाता है। इट कुड बी 3 or 5 mark question। derive the formula for radius of orbits in Bohr atomic model। तो वैसे तो Bohr atomic model would be applicable for hydrogen like atom only। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। इफ आई टॉक अबाउट हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर हीलियम को सिंगली आयनाइज्ड कर दें तो इट्स मोर और लेस लाइक हाइड्रोजन ओनली, एक्सेप्ट द फैक्ट कि उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन सिंस तुमने इसको आयनाइज कर दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में, तो हाइड्रोजन लाइक हो गया ये। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में यू हैव 1 प्रोटॉन ऑन 0 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन में 1 होता है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम को अगर डबली आयनाइज कर दे तो क्या होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 3 प्रोटॉन हो गए, तो Z तो इसका 3 हो जाएगा। एंड सिंस 3 इलेक्ट्रॉन थे, हमने उसमें से 2 निकाल दिए डबली आयनाइज्ड, तो ये भी हाइड्रोजन लाइक हो गया। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम विल बी ऑल्सो हाइड्रोजन लाइक। सो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम को अगर हमने आयनाइज कर दिया सिंगली हीलियम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। डबली आयनाइज लिथियम भी हाइड्रोजन की तरह होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। एंड ट्रिपली आयनाइज बेरिलियम वुड आल्सो बी having 1 electron। So we take a general case, suppose we have an atom of atomic number say Ze, and electron is revolving with speed v and the radius is r।
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, v is the speed and r is the radius. तो इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहा है? व्हाट इज द कॉज फॉर रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट तभी रोटेट करेगा जब उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. तो द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. कैसे निकालोगे? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. तो बेसिकली हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वेट कर दिया. हमने सिर्फ फोर्स में चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया है. हालांकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, बट वी आर टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड. सो आई एम नॉट टेकिंग माइनस ई, बिकॉज आई एम टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो हमने अभी क्या किया है? फर्स्ट वी आर डिराइविंग बोर्स रेडियस का फॉर्मूला. So we have equated the centripetal force with the electrostatic force of attraction between the two. लिख लो एक बार इतना. लेफ्ट में है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r और m ओमेगा स्क्वायर r. तो एज सच mv स्क्वायर हो जाएगा kze स्क्वायर बाय r स्क्वायर. ये बाद में काम आएगी इक्वेशन. Also, we know this angular momentum should be equal to nh by 2 pi. mvr is equal to nh by 2 pi. This is quantization postulates, quantization of orbits. तो हमें r फाइंड करने में हम क्या करेंगे? यहां से v निकाल लेते हैं. v कितना हो गया? nh by 2 pi m r. और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट में. देखो क्या आता है. और फिर इसको r के लिए सॉल्व करो. एक r कट जाएगा. इसको पूरा एक बार देख लो ताकि याद हो जाए. पहले स्टेप में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इक्वेट किया. एक आर कट गया. उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम को nh बाय 2 पाई से इक्वेट करके वेलोसिटी निकाल के v को सब्स्टिट्यूट कर दिया. आर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आर. नाउ लेट्स फाइंड आर. कितना आ रहा है यहां से? क्रॉस मल्टी एक एम भी कट जाएगा. ये आ रहा है.
इसको Rn लिख देता हूं मैं, N इज सबस्क्रिप्ट। देखो जरा, यही है। R को मैंने Rn लिख दिया, nth ऑर्बिट। Inside the bracket, every term, is constant. Planck's constant 6.62 10 to the power minus कितना होता है 34, 4 into 3.14 whole square, mass of electron 9.1 10 to the power minus 31, K you already know, 9 into 10 to the power 9, and E is 1.6 10 to the power minus 19 the whole square into n square by z. सॉल्व करो ये कांस्टेंट वाली टर्म, इसको सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है। तो 5.29 आ रहा है। अच्छा, 1.6 का स्क्वायर 2.56 हो गया, minus 38, and this minus 38 minus 31 plus 9. तो ये कितना हो जाएगा, -69 माइनस +9 भी था ना। अच्छा हाँ, ठीक है। कितना बता रहे हो तुम अगस्त? तो 5.29 into 10 raised to power minus 11। ओके, दैट इज 0.529 10 to the power minus 10, ये आ रहा है ना। यस। तो दैट मीन्स nth ऑर्बिट का जो रेडियस है, it is coming out to be 0.529 angstrom
into n square by z angstrom. Approximately 0.53 angstrom आ रहा है. N is the number of orbit, like if n is 1 is the first orbit, n is 2 is the second orbit, z is atomic number. तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, in case of hydrogen, z कितना होगा 1. Rn would be 0.529 n square. तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना आएगा 0.529 एमस्ट्रॉन्ग. हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. सेकंड का आएगा 4 टाइम्स दिस. थर्ड का आएगा 3 स्क्वायर 9 टाइम्स एंड सो ऑन. और nth ऑर्बिट का कितना हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स द r1. एक क्वेश्चन लिखो. फाइंड find orbital radius find orbital radius of fifth orbit. Find orbital radius of fifth orbit of triply ionized beryllium atom. Of triply ionized beryllium atom. Triply ionized beryllium. Find atomic radius for triply ionized beryllium atom. करो. वो डी ड्यू डी न्यूट्रॉन ही हो जाएगा ना फिर. हम्म. वो डी न्यूट्रॉन ही हो जाएगा ना. ट्रिपली आयनाइज्ड. ट्रिपली आयनाइज्ड का मतलब वो हाइड्रोजन लाइक हो गया ना. अच्छा वो. देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है. 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन. उसको तुमने ट्रिपली आयनाइज कर दिया तो इट हैज बिकम सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम. ठीक दिस है. ओके. यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. एन को इसमें 2 लेंगे 1 लेंगे. देखो सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है कि Z क्या होगा. सिंस इस बेरिलियम का Z चाहे वो डबली आयनाइज्ड हो सिंगली आयनाइज्ड हो या बेरिलियम एटम क्यों ना हो, बेरिलियम का Z होता है 4. फिर N जी. की वैल्यू बतानी है. N कितना है, कौन सा ऑर्बिट है.
सेकंड ऑर्बिट, अच्छा फिफ्थ ऑर्बिट। ओ, हाँ, n को 5 ले लो, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, बस r तो 5 हो गया, तो फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है हमें। 0.529 इंटू n² दैट इज 25/z एंगस्ट्रॉम। 3.30। ये आ गया आंसर। द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम कितना आ रहा है? 0.30। ये आ गया। So Z will be decided by the atom and then n की वैल्यू दे रखी होगी क्या है, बिकॉज इलेक्ट आयनाइज करने से उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, एटॉमिक नंबर वुड बी रिलेटिंग टू द एलिमेंट। ठीक है, सो इसको आज ही रिवाइज कर लेना, जिस क्लास में जो पढ़ाया जाएगा सेम डे यू शुड रिवाइज दैट, सो विल नेवर फॉरगेट इट। तुम्हें जल्दी रिकॉल हो जाएगा, इसी चीज को तुम 2 दिन बाद 3 दिन बाद करोगे रिकॉल नहीं कर पाओगे क्या किया था। सो फिनिश इट टुडे इटसेल्फ, गिव हाफ एन आवर टू दिस चैप्टर अगेन जो हमने आज किया है, एंड देन नेक्स्ट क्लास में आई मूव ऑन। ठीक है, ओके सर। एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय सर, थैंक यू।